today is food photography. So topics for today in food photography are reviewing and lighting. These things are very important in order to pull off a very good food photography. तो क्रिएटिंग अ गुड फोटोग्राफ किन चीजों से फूड फोटोग्राफी अच्छी बनती है, एस्थेटिकली अपीलिंग लगती है व्यूअर को? कंपोजिंग, प्रॉप्स एंड स्टाइलिंग, रिव्यूइंग एंड लाइटिंग, ठीक है। अब उसके बाद है रिव्यूइंग फूड फोटोग्राफी। इन ऑर्डर टू बिकम फोटोग्राफर यू शुड अंडरस्टैंड एंड नो रिव्यू कैसे करते हैं फूड फोटोग्राफी को। तो रिव्यू का मतलब ये है कि एनालिसिस कैसे करते हैं फूड फोटोग्राफी का, अपनी ही फोटोग्राफी का एनालिसिस कैसे करते हैं, दूसरे फूड फोटोग्राफी का एनालिसिस कैसे करते हैं, और अपने पॉइंट्स जो के नेगेटिव पॉइंट्स हो गए हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ताकि वो एरियाज को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। और फूड मैगजीन्स रिव्यू करते हो आप, फूड सब्सक्रिप्शन कर लेते हो ऑनलाइन मैगजीन्स की फूड फोटोग्राफी के या फूड के मैगजीन्स की, तो टू सी अ लॉट ऑफ शॉर्ट्स एंड गेट मोर आइडियाज। तो रिव्यूइंग फूड फोटोग्राफी, रेड कलर टेल अस दैट इट मस्ट बी स्पाइसी, सिंपल। क्योंकि हमारे ब्रेन में फ्रॉम द एज ऑफ व्हेन वी वर टॉडलर्स तब से फीड हो गया बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस में, कि रेड कलर जो है वो स्पाइसी है। क्योंकि खाने हम खाते हैं देसी या नॉन देसी जो भी है, चिली रेड होती है उसके ऊपर, उससे स्पाइसीनेस की फीलिंग आती है। फिर एडिंग ग्रीन ऑन टॉप गिव्स कॉन्ट्रास्ट टू द डिश। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कलर थ्योरी में कि रेड का कॉन्ट्रास्ट कलर व्हील में ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट रेड के क्या होता है? ग्रीन। तो ग्रीन कॉन्ट्रास्ट, तो ऑब्वियसली जब आप ग्रीन वेजिटेबल्स या गार्निशिंग कर देते हो अपने फूड पे रेड पे, तो दैट गिव्स अ कॉन्ट्रास्ट। फिर चॉइस ऑफ क्रॉकरी, सटल, नॉट डिस्ट्रैक्टिंग, इनफैक्ट एड्स, ठीक है। सटल क्रॉकरी यूज कर रहे हो, इसमें इसने डल ब्लू यूज की हुई है, ठीक है। तो एम्फेसिस क्रॉकरी पे नहीं आ रहा, बट इट्स ऑल्सो एडिंग एज अ ब्यूटीफुल एलिमेंट, एज अ कलर टू द एंटायर फ्रेम, ठीक है। अब sense of cool in comparison fire, अच्छा, these stacking chicken make chunks more prominent, photograph should be recalled the experience of similar experience। तो आपने अपने जो फूड आइटम है उसको प्लेस कैसे किया हुआ है, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेसमेंट कैसे की हुई है। जैसे उसको सर्व किया जा रहा है, जरूरी नहीं है जिस तरह सर्व किया जा रहा हो पिक्चर्स के अंदर उसी तरह की प्लेसमेंट की हो। आप फोटोग्राफर हो, आपने अपने स्टाइल से प्लेसमेंट कर सकते हो। एग्जैजुरेशन ऑफ कलर्स ऑब्वियसली किया जाता है पोस्ट प्रोडक्शन में, कलर्स को एग्जैजुरेट करते हो आप। जो ग्रीन होता है वो एक्स्ट्रा ग्रीन कर देते हो, जो रेड है उसको एक्स्ट्रा रेड कर देते हो, ठीक है ना। टेक्सचर आपने दिखाना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, बाज होगा जरूरी है हर वक्त क्लीन शॉट ही लो, क्लीन इन अ वे कि आपका फूड का जो आइटम है उसकी जो प्लेसमेंट है वो बड़ी साफ सुथरी क्लीन ही हो। थोड़ा बहुत मेसी लुक भी अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल द इमेज यू सी हियर, दिस इज अ बिट ऑफ मेसी अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे एक बंदे ने अभी खा रहा था और उस दौरान पिक्चर ले लिया, राइट, कि ये पीस पूरा है एंड देन दिस पीस जो है ये बीच में से इसका जो रबरी चीज है वो एक इलास्टिसिटी की लुक आ रही है कि किसी ने तोड़ा है इसको, यू नो। एंड देन थोड़ा सा ये स्प्रिंकल भी हुआ है, ब्रेड क्रम्स भी पड़े हुए हैं। तो दिस गिव्स अ मेसी लुक, बट दिस इज आल्सो गुड समटाइम्स। बट मेसी इंटेंशनली मेसी किया हो, आपने अपनी प्लानिंग से एलिमेंट्स को मेसी किया हो। रिव्यूइंग, अच्छा, ब्लूबेरीज कॉम्प्लीमेंट इंग्रेडिएंट टू पैनकेक्स, ठीक है। जितने भी पैनकेक्स बनाते हैं उसके अंदर ब्लूबेरी यूज की जाती है। तो स्टाइलिस्ट के तौर पे फूड फोटोग्राफर जो है इसको एज ए इंग्रेडिएंट यूज करता है, ठीक है। तो उसके जो है क्योंकि वो कलर भी एक ऐड करता है, वो क्रेविंग, ब्लूबेरी का जो टेस्ट होता है बड़ा क्रेविंग होता है, बड़ा माउथ वाटरिंग होता है। तो वो चीज भी एलिमेंट एज एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो अपनी कॉम्पोजिशन में। then you adding syrups on top of your food, ठीक है। ये बड़े शॉट्स आप देखोगे फूड फोटोग्राफी में जिसमें सिरप्स ऐड हो रहे हैं, उसके ऊपर पोर किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे बाजू का आप हनी पोर कर सकते हो अपने फूड आइटम पे,
या आप कोई और जैसे चाय पोर होते हुए दिखा रही है, कॉफी पोर होते हुए दिखा रही है, तो दीज और आर कॉल्ड सिरप्स। सिरप्स को पोर होते हुए आप दिखाते हो तो दैट लुक्स वेरी माउथ वाटरिंग, एंड ऑब्वियसली उससे एक लाइन भी क्रिएट होती है, लीडिंग लाइन भी क्रिएट होती है, विच इज लीडिंग यू टूवर्ड्स द सब्जेक्ट। वो वाली फील भी आती है। समटाइम्स इट्स नॉट ओनली अबाउट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, तो इंग्रेडिएंट्स के फूड शॉट्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन उसकी अरेंजमेंट कैसे की हुई आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अरेंजमेंट के आइडियाज आपके माइंड में आते हैं, आप जिस तरीके से अरेंजमेंट करते हो। यू सी अ लॉट ऑफ लाइंस हियर, ठीक है, स्पून्स की वजह से लाइंस क्रिएट हो रही हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। और जो प्रिंसिपल कॉम्पोजिशन का इसमें अप्लाई हुआ है वो गोल्डन ट्राइंगल फोटोग्राफी में अप्लाई किया हुआ है। एंड देन एक्शन, एक्शन फोटोग्राफी इन फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उस उससे शॉट आपका बड़ा स्पेशल हो जाता है, एक मूवमेंट उसके अंदर आ जाती है, उस पर्टिकुलर इवेंट का पूरा सीन एक पिक्चर में आपको नजर आ जाता है। बट अगेन यू नीड टू हैव अ फास्ट शटर, ट्राइपॉड फॉर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, बिकॉज फास्ट शटर होगा, लाइट कम होगी, तो लाइट का बड़ा ख्याल रखना है आपने कि लाइट, एम्पल अमाउंट ऑफ लाइट होता है। अब इस फोटोग्राफर ने नेचुरल लाइट में ये शॉट लिया, आप देख रहे हैं, ये विंडो है बराबर में, ये विंडो है, विंडो से डिफ्यूज लाइट आ रही है, डिफ्यूज नेचुरल लाइट आ रही है, और उस हिसाब से ही शॉट लिया है। एंड अगेन पोरिंग विस्कस चॉकलेट, चॉकलेट का सिरप भी ऐड कर सकते हो आप, डिपेंड करता है आप किस चीज को फोटोग्राफ कर रहे हो, ठीक है। लाइटिंग देखते हैं। लाइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एज आई सेड इन द स्टार्ट के लाइटिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फूड फोटोग्राफी में, कि इस तरह की ड्रामेटिक लाइटिंग आप यूज कर रहे हो। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं वो सिर्फ नेचुरल लाइट से फूड फोटोग्राफी करते हैं, एंड दे ऑल्सो डू इट, एक्सप्लोर इट विद आर्टिफिशियल लाइट। आप दोनों से फूड फोटोग्राफी कर सकते हो, ठीक है, बट डिपेंड आपके पास सेटअप किस चीज का अच्छा है। आर्टिफिशियल लाइटिंग जब आप करते हो तो आप हार्श डायरेक्ट स्पीड लाइट जो डायरेक्ट यूज होती है, डायरेक्ट फ्लैश लाइट जो डायरेक्ट फायर करती है आपके सब्जेक्ट पे, वो यूज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उससे आप बड़ी, एक तो हार्श लाइट आती है, हार्श शैडोज आते हैं, ठीक है, और वो फील जो है बड़ी अनप्रोफेशनल सी लगती है फूड की। तो इसलिए आपको डिफ्यूज लाइट चाहिए होती है, तो यूज सॉफ्ट बॉक्सेस, अम्ब्रेलाज, ठीक है, रिफ्लेक्टेड सोर्सेज। तो उससे डिफ्यूज लाइट आप यूज करते हो, ठीक है। तो सॉफ्ट लाइट से क्या होता है कि क्लीनर लुक आता है, लेस कॉन्ट्रास्ट होता है, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि सॉफ्ट डिफ्यूज लाइट जो है पूरे आपके जो कॉम्पोजिशन है उसको इल्यूमिनेट कर देती है इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट से, ठीक है। अगर आपके पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं हो, एक्सेसिबल ये तरीका, ये व्हाइट शीट्स कैन बी यूज्ड टू बाउंस ऑफ लाइट्स एंड फॉर डिफ्यूज लाइटिंग। अच्छा, फिर क्या, देयर आर 3 बेसिक लाइट सोर्स टाइप्स जो फूड फोटोग्राफी में होती है। एक फ्रंट लाइट होती है जो सामने से आप फूड पे प्ले करते हो, ठीक है, ताकि शैडोज अवॉइड हो। एक साइड लाइटिंग होती है कि मैं यहाँ से लाइट प्लेस करूँ तो उसके शैडोज आएंगे, ठीक है, हाईलाइट, टेक्सचर्स, कॉन्ट्रास्ट नजर आएंगे। एक बैक लाइटिंग होती है कि फूड के सब्जेक्ट के मैं बैक से लाइट फायर करूँ, ठीक है, तो उसका अलग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स लाइटिंग एक्सप्लोर करो तो पता चलेगा कि क्या डिफरेंट लुक आता है आपके पिक्चर्स में। फिर नेचुरल लाइट जो है वो भाई जाहिर है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इट कैन बी वेरी मच डिपेंडेबल, इट चेंजिंग आर टू आर, ये मसला है उसके साथ कि 1 बजे की लाइट कुछ और होगी, 4 बजे की लाइट कुछ और होगी, क्योंकि नेचुरल लाइट है, ठीक है। अच्छा, नेचुरल लाइट जो है उसकी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं कि भाई फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द डे रेंजिंग टू ब्लू इन द मॉर्निंग ह्यूज, गोल्डन आवर, सनसेट। अब वो सब तो अपनी जगह, आप अगर अपने फूड आइटम को बिल्कुल ही ओपन लैंडस्केप में जाके पिक्चर ले रहे हो तो ये चीजें होंगी, लेकिन आप घर के अंदर ले रहे हो तो यू नीड टू बी क्लोजर टू योर विंडो, ठीक है। ओवरकास्ट और इनडायरेक्ट नेचुरल लाइट, जैसे क्लाउडी वेदर हो तो उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग लाइट होती है, ठीक है, फोटोग्राफर्स फिर उस लाइट को बड़ा अच्छा यूज करते हैं, सॉफ्टर लुक आता है उस लाइट की वजह से। एंड में कुछ कैमरा सेटिंग्स लिखी हुई है कि एपरेचर नॉर्मल आप रख सकते हो F7, और डिपेंड आप कम करना चाहो कम भी कर सकते हो, ठीक है।
shutter speed, if you're using not using a tripod, तो 1/100 से ऊपर फास्टर यूज करो, या फिर डिपेंड करता है आप मोशन फ्री शॉट को करना चाहते हो तो और फास्ट यूज करनी पड़ेगी. चलिए जी, आई थिंक दिस इज इट. So this is the skirt after the print and this is before. Make your mask and then add any print on it. Alright, so let's say if I want to add a pattern on this curtain. So the first step is that you need to have a pattern on your computer, and then the second step is that you need to make a selection of this curtain. So how would you do that? You would use here the simplest tool for making selection. You would use magnetic tool, and you would zoom in a bit and you will start making the selection like this. Now this is going to take a while, so I'm going to do this quickly. So now make sure you click on this option, add to selection, while using the magnetic lasso tool so that you can select the next curtain. Now obviously there are a few errors in this selection, so I'm going to fix that. For that I'm going to use a polygonal lasso tool, and it depends, I want to add to selection or subtract to selection. It depends which tool is needed. Select that one. For example, in this case, do you see this? I've missed this part. So I'm going to select add to selection, and I will keep on moving my polygonal lasso around it like this. But in this case, I need to subtract to selection, right? So I'm going to select this, or you can press Alt on your keyboard, which is a shortcut like this. Also notice one thing, that you need to add pattern on the curtain fabric, not on the rods. So you need to minus or deselect the rods. So how would you do that? You would zoom into the rods like this, and you would select subtract to selection. And now by using polygonal lasso tool or maybe magnetic lasso tool, depends on the situation, you can actually select the rods like this, right? But still there are a few errors, you need to fix them. For that I'm going to use a polygonal lasso tool. You also need to minus this out of your selection, and you need to add this into your selection. So wherever you want to add anything to the selection, press shift on your keyboard, and whenever you want to minus something from your selection, keep pressing Alt on your keyboard. So it will take a while when you will fix this. Now I'm quickly going to do the same thing with the next curtain. I have to subtract the rod out of my selection. I'm going to simply do this by selecting subtract to selection. Alright, so now that you have completely selected your curtain properly, now is the time for the next step. The next step is that you save this selection. So you go to select, you go to save selection, and then you name anything to your selection. For example, I will write curtains and simply press OK. So the selection is saved somewhere here in the channels like this, right? This thing. Okay. So now the next step is that you need to make a mask of this curtain.
For that, what you should do is that you save another document. Like I'm going to go to File, Save As, make another copy of this document, and I will rename it as mask. Save. Make sure you save PSD file of mask. Now you need to make a mask. You mean you need to get rid of the everything here except the curtain. So I'm going to press Ctrl Shift I, which is select inverse, and then simply press delete on your keyboard. So this will delete everything but curtain. What you should do now is press Ctrl D for deselect. Now we need to make a mask of this. For that, the next step is first convert this into a black and white image. So you go to Adjustment, Image, Adjustment, and you go to Hue Saturation, and you move this saturation all the way back to the left. Now this is a black and white image. Okay. Just press OK. Also, one more important thing you should do is like you want to have maximum amount of darks and lights in these curtains, or just press Ctrl L on your keyboard. So this levels screen comes in front, right? And then what you do is that you move this here, and add maximum amounts of darks and lights in your curtain. Like this, a very contrasting image. And then press OK. After that, the next step you should do is go to Filter, go to Blur and Gaussian Blur. So you need to blur this out. For example, I think in this case, 10 would be a good number. I'm okay with 10. And then simply press OK. After this, save this document on the same file, rename. You renamed mask, overwrite this file, save. So once this document saves, just close it. You don't need it for now. After that, go back to your original file that was curtain map. Open that file. Now this is the time to add the print. For example, in my case, I have this floral print which I want to add onto the curtain. So I'm going to simply drag this, drop it on my Photoshop here. And now I'm going to press Ctrl A, Ctrl C. And I'm going to paste this here on my curtain, Ctrl V. Now, obviously this print is bigger than the image itself. So I'm going to press Ctrl T, which is transform, Ctrl 0. And now I will scale it down proportionally. Also, you could reduce the opacity so that you can see your curtain through the print. So you know how big the print should be. For example, if you're happy with this scale, just press enter on your keyboard. After that, you can take the opacity back to its normal, which was 100. Now, this is the time to apply the displacement mask, okay? For that, what you need to do is go to Filter, Distort, Displace. Now keep these same settings, horizontal scale 10, vertical scale 10, and stretch to fit, and repeat edge pixels, and then press OK. It will ask you for the mask file. So now select this mask file which we made earlier, press open, and you would see there's a slight change in the print. It has moved in a way that the bumps of the curtain, the darks and the lights, the design has moved accordingly. So now what you do is you go back to your channels and you select your curtain, and then simply press Ctrl Shift I on your keyboard to select inverse, then press delete. So the print which was not part of the curtain has deleted, and this is exactly what you wanted. Now press Ctrl D. After that, in the layer blending modes, select multiply. Okay. After selecting multiply,
If you're not happy with the result, make a duplicate layer of your print. And then after making the duplicate layer, you can actually play with the opacity and fill to make it look more realistic. Right? So this is it. You've made your, you've replaced your curtain with the print you wanted, like this. So make sure you save this document, save as, and replace it or overwrite it with curtain map, the original document. Now once you've saved this, you can always add multiple prints on your curtains. Each time you have to follow the same step. For example, you're not happy with this print, right? So get rid of these layers just by turning the eyes off. And you have another print with you, for example, this one. This is a weave design and you want to, let's say, add this onto your curtain. You just press Ctrl A, Ctrl C and you paste it here on your curtain file. Now you need to reduce its scale proportionally. So press Ctrl T, which is transform. Press Ctrl 0 and proportionally scale it down. And the same steps you need to follow, move it on top of the curtain. Now you follow the same steps which you did earlier. You go to Filter, Distort, Displace. Keep the same settings, press OK. Select the mask file which you created earlier, select Open, and the design changes itself according to the curtain's folds. Then you go to Channels, select your curtain, press Ctrl Shift I, press Delete, press Ctrl D, and now you can multiply it like you did earlier. Or maybe try another option, whatever blending mode suits best as per your design and the product. In my case, I'm going to use multiply. I'm going to make another layer of it, duplicate layer. And now maybe I can change the blending mode of this layer. Let's say this one. Now you can play with the opacity. So by this method, you can add any print on your product. Now, first of all, let's say if you want to add a pattern on this skirt, the first thing you should do is that make a selection of your product. In this case, we are going to make a selection of this skirt by using magnetic lasso tool. I will zoom in a bit. Right. So now if there is any error in this selection, you can fix that by using polygonal lasso, like adding it to the selection or separating it out of the selection. It depends on the situation. So when you're happy with the selection of your product, just go to Select, Save Selection and name it anything. After that, the earlier product was a curtain which was white in color. That's why my mapping or the print I was pasting on it looked very nice. So you need to convert this into white as well. For that, what you could do is go to Image, go to Adjustment and go to Hue Saturation. Let's convert this into black and white by moving the saturation all the way towards the left. Then press Ctrl L for levels. This looks a bit whitish now, which is good. Now you need to make a separate file, save as, by the name of mask. In this case, I'm using the rename as skirt mask. And now I will press Ctrl Shift I. Next step is Ctrl D. Now filter, blur,
Gaussian blur. In this case, I think 4 is a good number. I'll press OK, and then I'll save it again on the skirt mask file. I'll overwrite it. Now open the original file, which was skirt mask, which you saved earlier, and simply drag and drop your print on it. In this case, let's say if you want this print, press Ctrl A, Ctrl C, go to your file, Ctrl V. Obviously, this is way big out of proportion because of the scale. Scale it down, press Ctrl T, Ctrl 0, scale it down onto your product. You can also change its opacity to see that how it looks on your skirt and how big it should be. Let's say when you're happy with the scale, just press enter. You can convert this opacity back to normal. Now go to filter, distort, displace, press OK and select the mask, skirt mask file you created earlier. Press open. After that, you go to channels, you select your skirt by pressing Ctrl and clicking here. Then press Ctrl Shift I, delete. And now just Ctrl D and simply multiply. Now after multiplying, if you don't like the effect, you can actually switch to other effects in the blending mode and see which one looks better. Maybe you like this one. I kind of like this one, overlay. Let's say if you're not happy with its visibility, you can duplicate the layer. And you can also change its blending options. So this is the skirt after the print and this is before. So it doesn't matter whatever your product is. All you need to do is first create a mask of your product. Selection and mask are very important. So once you do that, you can make your mask and then add any print on it. So I hope you like this video. Do hit a subscribe to my channel. See you in the next video.